Good morning, students. It is the next class after introduction of biology. In last class, we have discussed about the what is biology, what are the branches of biology, who is the father of biology, who is the father of zoology, who is the father of botany. Now, in this class, we have discussed about some related branches which is related to biology. ये जो क्लास रे आमे किछि देखिबा हमर किछि साइंस अछि जो जाकि कोन अछि हमर बायोलॉजी सह रिलेटेड अछि से सब विषय आमे एबे ई क्लास रे किछि आमे देखिबा। तो देखो इथे कोन कहला व्हाट आर द इंटर रिलेटेड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इंटर रिलेटेड ब्रांचेस मु तुमको ऑलरेडी कहितली इन द साइंस there are main three branches, that is physics, chemistry and biology. Like that, the biology is interrelated to different branches. Like the first one is the biophysics. That means the biology is interrelated. That means the physics and biology are combined together or they are interrelated together. So what is biophysics? It is nothing but it is the study of different activity of living matter based on the principle of physics. That means कौन कहला भल से बुझा बायोफिजिक्स माने कौन कहला इट इज द स्टडी ऑफ एटा पढ़िबा हमें का विषय पढ़िबा ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी माने कौन जहा किछि भी हमें काम करूचे एक्टिविटी जहा किछि भी होचे आइदर सेटा फिजिकल हो बा केमिकल हो आइदर एक्सटर्नल हो बा इंटरनल हो द डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ living matter, that means the organism who have the life, that is the living matter based on the principle of physics को धरी की हमर जहा किछि भी हमें इंटर रिलेटेड बायोलॉजी संगे सेटा विषय पढियाटा हम कोन बोली कोते बायोफिजिक्स बोली कोते। जस्ट एग्जांपल वन इज इन द physics you have to study about the gravitational force and it also applied in the biology. This is the interrelated or the activity because due to the presence of gravitational force we are attached to the earth surface or the objects are fall down to the earth surface. So this is the biophysics. That means the biology and physics are interrelated to each other. The next one biochemistry. तो देखो बायोलॉजी उडे इमिति माने it is the one type of topic or it is the one type of branch of science which is interconnected to all parts of the science. Science रो जति सब पार्ट्स अछि लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हला ने सब संगरे समस्तंकर किछि ना किछि इंटर रिलेटेड रहिছে हमरो बायोलॉजी सह। तो नेक्स्ट वन इज द बायोकेमिस्ट्री. व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? इट इज द स्टडी ऑफ application of law of chemistry leads to the study of biochemistry. That means in biology the different applications of laws in chemistry. Chemistry law किछि हमर कोन होछि बायोलॉजी रे एप्लीकेबल होछि बाय यूज होछि so that these laws are interrelated to biology. So to study or combined study of the relationship or the application of law of chemistry which leads to the study of biochemistry. That means biology and chemistry, the combination of, just example, in the first year in the biology you have to study about the Krebs cycle, TCS cycle. These are the different biological activity which are interrelated to the chemistry. Or one example is that in our body different biomolecules are present, that is either amino acids, proteins and different type of vitamins. Their structure, how they will be formed in our body and what is the function, सेटा केमि तयारी होछि से जो केमिकल कंपाउंड जाके एवं सेमानकर फंक्शन कोन हम पढि पे ए सब जाके जो इंटर रिलेटेड विषय रे पढियाटा हम कोन बोली कोते द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉस ऑफ केमिस्ट्री लीड्स टू द स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री. दिस इज द सेकंड इंटर रिलेटेड ब्रांच. नेक्स्ट वन इज द बायोमेट्रिक्स. मैट्रिक्स वर्ड पुड तुम सुनिथिलो पिले द मैट्रिक्स वर्ड कम फ्रॉम द मैथमेटिक्स. ओके, तो इटा कोन कहला इट इज द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बायोलॉजी. The application of statistics. So in the second year you have to study about the statistics, different parts of the or different laws of the statistics in the math class. So that in the biology the interconnection between the bio and statistics is known as statistics in biology, or it is called as biometrics. That means the application of statistics metrics in the biology is called as biometrics. The next one is the radiobiology. The next term
कौन कहला नेक्स्ट टर्म द फोर्थ वन रेडियो बायोलॉजी व्हाट इज रेडियो बायोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑफ द लाइफ रेडियो एक्टिविटी डिफरेंट टाइप ऑफ रेस हला नै रे माने हमर जो कोन कह जाय जे हमर जो डिफरेंट टाइप ऑफ रे जोडा सेटा को हम कोन कहू इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑफ लाइफ what are the activity just example in the ecology in the previous classes or in 10th 9th standard you have to study about the different type of cosmic rays ultraviolet rays are coming to the earth surface and put on to the living organism and what are the activity और मध्ये हम छोट बळे सुनिचे कोन जे हमर जो सूर्य किरण हला नै जोडा कि which will be provide the vitamin C so these are the rays so the ray which is interrelated to the living of the life the study of the rays that is called the radiobiology it is the study of effect of radioactivity of the life what are the radioactivity that will be related to the life is known as radiobiology the next branch is the biotechnology this term maybe you are listening from other sources but what is the actual meaning of the biotechnology biotechnology is nothing but it is the study of microorganisms for commercial production that means what is microorganism देखो कौन कहला bio means life technology means something or the some technology which will be related to the life or living organism तो कौन कहला what is biotechnology it is the study of microorganisms what are the microorganisms these are the unicellular cells or the single cellular organism or the single cell organism like virus fungus bacteria paramecium fungi different type of it is the study of microorganism for the commercial production for the different productions like vaccines production for the food production or for the other preparations like preparation of the bread so these microorganisms are used for example one example is that for the production of vaccines विभिन्न प्रकार vaccines तैयारी करिया पय विभिन्न प्रकार मेडिसिनल पर्पस रे समानकर यूज करिया पय मध्ये हम कोन करते डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रा हम यूज करते ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा को यूज करते बाय अप्लाइंग डिफरेंट टेक्नोलॉजी विभिन्न प्रकार टेक्नोलॉजी यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म मानु हम कोन करते माइक्रो ऑर्गेनिज्म मानु को देहरु किछि गुडे प्रोडक्शन करते बा सेमानु को यूज करी किछि गुडे प्रोडक्ट हम बाहर करते से विषय रे पढिबाटा हम कोन बोली कहते बायोटेक्नोलॉजी बोली कहले तो बायोटेक्नोलॉजी व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन फॉर आवर कमर्शियल प्रोडक्शन वी कैन यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म स्टडी ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म इज नोन एज इन द बायोलॉजी इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर दैट the next one is the dairy technology this is this term also you have to listen in the previous sections but dairy means the dairy products like milk curd ghee माने the product which will be extract from the milk रो जो पदार्थ हम बाहर करते से सब जाक हम डायरी प्रोडक्ट बोली कहते तो ये जो क्षीर रो बाहर पदार्थ तो से विषय मध्ये पढिबाटा हम कोन बोली कहते डायरी टेक्नोलॉजी बोली कहले कोन कहले डायरी टेक्नोलॉजी इट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस इटा गोटे साइंस रो एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिल्क प्रोडक्ट कौन करछि इट इज द एप्लीकेशन माने कोन यूज भाबो इट इज द यूज ऑफ द साइंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग तयारी करिबा ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क प्रोडक्ट तुम तयारी करछे कर्ड तयारी करछे घी तयारी करछे हला नै डिफरेंट स्वीटनेस सब्सटेंस तयारी करछे स्वीट्स तयारी करछे तो ए सब जाक जो मैन्युफैक्चरिंग करूछे फ्रॉम द मिल्क दिस इज द स्टडी ऑफ द डायरी टेक्नोलॉजी नेक्स्ट वाला दिस इज द लास्ट वन और द लिस्ट that tropology what is tropology it is the study of food and nutrition the food that will be give us the energy or the nutrition which will be supply energy to production of the different type or doing the metabolic activity so that the study of food and nutrition is called as tropology so these are the different branches of biology or these are the different interrelated branches of biological science which will be applied in day to day life हमर डे टू डे लाइफ रे ए सब जाका हमर कोन होचे बायोलॉजी रो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटररिलेटेड ब्रांचेस माने द बायोलॉजी connected with the or interrelated with the or joined with the different parts of the science like physics chemistry mathematics of the
रेडियोलॉजी मैट्रिक्स हला नहीं सो दैट ई जाक आसला हमर कोन डिफरेंट ब्रांचेस जाक आसला जो जाक कोन होचे हमर बायोलॉजी संगे इंटरकनेक्टेड नेक्स्ट देखियो हमें कोन डिफरेंट organ oriented branches. Okay, I can erase it. Now we have studied about the pure branches, of zoology. In the pure branches of zoology, in previous classes I have already told that the two things. You have to remember that in the previous class I have told that different branches or different terminology of zoology. Out of them, the first one is the morphology, and I can told that the logy means to study. So what is morphology? It is the study of external structure of the living organism. ये कौन कहला व्हाट इज मॉर्फोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ एटा से विषय पढ़िबा जोटा कि हमर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर माने कोन दिस इज द स्ट्रक्चर और द पर्टिकुलर शेप व्हिच विल बी व्यूड इन आवर आई जोटा कि हमर खाली आखि देखा जाउछ माने बाहर को जोटा देखा होछि से विषय पढ़िबाटा हम कोन बोले कहते द टर्म इज नोन एज मॉर्फोलॉजी नेक्स्ट वन इज द एनाटॉमी What is anatomy? It is nothing but it is the study of internal structure of the Okay, so what is anatomy? It is the study of internal structure. Internal structure means in our body. There are different type of organs are present. What is the organs function? What their functions? How they will be do activity in day to day life? से सब जाक विषय इंटरनली हमर जहा किछ अछि से सब विषय पढिबाटा हम कोन बोली कहते एनाटॉमी बोली कहते एक्सटर्नली जहा कि देखाउते सर एक्सटर्नली कोन देखाउते एग्जांपल एक्सटर्नल बा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ स्किन ता हम बाहर देखा जाउची ओके आई देखा जाउची हेयर देखा जाउची हला नै बा किछि जो जिंस हम बाहर को माने एक्सटर्नली किछि विजिबल होउची से सब विषय पढिबाटा हम कोन बोली कहते मॉर्फोलॉजी बोली कहते एंड द ऑर्गन्स और द सिस्टम्स और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स which are present internally. Study of the internal structure of the living organism is known as anatomy. The third one is these are the different branches of biology or these are the called as we can simply called as these are the different terminology. Next one is the genetics. Genetics kono it is the another branch of the biology. इटा बायोलॉजी रो मध्ये उटा ब्रांच और जूलॉजी रो मध्ये खाली जूलॉजी रो बोली कहले बने बॉटनी रो मध्ये हमर जेनेटिक्स अछि तो व्हाट इज जेनेटिक्स इट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन it is the study of heredity and variation of the living organism. Okay, कौन कहला देखो पिले the third one is the branch of the zoology that is genetics. It is nothing but it is the study of two words. it is देखो दीटा word आसला गोटा आसला heredity and next one is the variation. So simply it mu kichira jinso kahi dosi genetics bishare we have discussed in the second year in class 12
but in this we have just shortly tell that what is heredity. It is nothing but it is the transformation of the character from the parents to their offspring. माने parents to माने आमर parents to आमे जहाँ किसी similar structure धरी के आसे बा similar character जहाँ किसी भी धरी के आसे सही विषय तक सही तक आमे कौन बोले कोचे heredity. And sir, what is variation? It is nothing but the differential character which will be come from the parents or the parents to the offspring, or the differential character which will be shown in the offspring body and it will be different from the parent, that is called variation. Variation माने कौन कहला पिले जोटा कि हमरो पेरेंट्स मानक देहरे नाही किंतु तांकर ऑफस्प्रिंग मानक देहरे देखा गला बा ऑफस्प्रिंग देहरे नाही किंतु सेही कैरेक्टर ता हमरो पेरेंट्स मानक देहरे रही अछि माने किछि चेंजनेस कैरेक्टर किछि चेंज आसला सी जो चेंजनेस कैरेक्टर आसला ताका हमें वेरिएशन बोली कोचे. व्हाट इज द हेरिडिटी? द सिमिलर कैरेक्टर व्हिच विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी. So study of heredity and variation is known as genetics. Okay, the next one is the देखो तीन टा गला कौन गला morphology, study of external structure, anatomy, study of internal structure, genetics, study of the heredity and variation. Next one is the physiology. These are the most important terms. This is the most important term which are mainly we have studied for in the next session, so next classes, so that we have discussed the different terminology or branches of the biology. What is physiology? It is the study of function of different parts of the organ system. It is the study of function of different parts of the so कौन कहला what is physiology? It is the study of function of different parts of the living organism. माने आमर जो डिफरेंट पार्ट्स अछि जे कोनोसी पार्ट तो मोटा एग्जांपल नियो एग्जांपल आमर हैंड कोन काम करूछि से सब विषय पढियाटा हम कोन बोली कोचे फिजियोलॉजी बोली कोचे. आ उडा एग्जांपल आखी आई व्हाट इज दैट? इट विल बी हेल्पफुल फॉर विजन. माउथ इट विल बी हेल्पफुल फॉर टकिंग हला ने. so how this mechanism will be take place and how the working mechanism or how the different organs are perform their function is to study about the different functions or the different parts of the organs of a living organism is known as physiology. Is the next one is the ecology. What is ecology? Eco तमे सुनी थिबो ecology what ता मध्ये हमें सुनी थिबा हला नै. This is nothing but it is the study of relationship between the environment and their surrounding organisms. So कौन कहला what is ecology? It is the study of कौन कहला? It is the study of environment. It is the study of environment and the relationship between it is the study of environment or the relationship between the environment and their surrounding organism. देखो बिले कौन कहला? This is the another term. This is called as ecology. What is ecology? It is nothing but it is the study of environment or the relationship between the environment and the surrounding organism. So कौन कहला? Environment. In the different places, different environment is there. Just example in Odisha,
The climatic condition is more about the sunny or the dry, or in some time it will be rainy or cold. But in case of Himalaya, the total years will be goes with the winter season or the cold area, so that according to their environment, सेठिकार एनवायरनमेंट आउ एठिकार एनवायरनमेंट विषय जो डिफरेंस रोचे कौन डिफरेंस रोचे सेमानकर हमर जो बॉडी स्ट्रक्चर different organisms are available, what are the different products or the food products that will be product in that particular environment, and what are the different type of products we can cultivated in a particular condition. So these are the difference or this is the relationship between relation माने environment और सही एनवायरनमेंट भितर थिबा ऑर्गेनिज्म मानक भितर जो कॉम्बिनेशन ऊपर पढिबाटा हम कोन बोली कहते इकोलॉजी बोली कहते. तो नेक्स्ट कोन गला हमर इकोलॉजी. इकोलॉजी कोन गला इट इज द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड देयर सराउंडिंग ऑर्गेनिजम्स. So these are the different terms or the different branches of the zoology. There are another some branches are there. I can told you. Okay. Next one is the pathology. What is pathology? It is nothing but it is the study of organism, symptoms, and their effective diseases. Different diseases related to the plant and animal. माने हमर जो प्लांट्स और एनिमल्स मानू जो डिफरेंट डिजीजेस होछ सेमानकु डायग्नोसिस करबा एवं सेमानक विषय पढिबाटा को हमें कोन बोली कहते पैथोलॉजी बोली कहते. लॉजी मींस टू स्टडी आउट. द नेक्स्ट टर्म, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? दिस इज नथिंग बट द माइक्रोबायोलॉजी. What is microbiology? It is nothing but it is the study of microorganisms हला. तो कौन कहला what is microbiology? It is the study of microorganisms and their functions to the commercial use. हला ए जो हमर विभिन्न प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म मानक विषय पढिबा एवं सेमानकर व्हाट आर द कमर्शियल यूज कोन कोन सेमानकर यूज होचे से सब विषय पढियाटा हम कोन बोली कहते माइक्रोबायोलॉजी बोली कहते. तो दीज आर द मेन ब्रांचेस ऑफ और द प्योर ब्रांचेस ऑफ द जूलॉजी. इन द नेक्स्ट क्लास, okay, we have discussed about the what are the different parts that will be present in our body and the study of different parts, what are the terminology will be given hela nai. So these are the organ related branches. Okay, so in the next class we have discussed about the what are the organs present in our body, okay, living organism, and organ related to zoology hela nai, or organ related branches. In next class we have